Welcome back to our special show where we're talking about child sexual abuse and the impact that it can have on children, and also what parents, teachers, society can do to ensure that children get the best help, best sort of counseling possible to deal with these issues so it doesn't have a long-term impact. Now, before we went into a break, we were talking about the dangers on the internet that many children are now facing, especially given that children have been using their gadgets and laptops more and more in the last 2 years. And Amit Dubey, cyber expert, Amit, you were just telling us about the kind of dangers there are, how in India it's a lot more, we don't even realize this. But tell us now, what can parents do? Parents क्या कर सकते हैं बच्चों को सेफ रखने के लिए ऑनलाइन, जब वो ऑनलाइन जाते हैं, क्योंकि अब ऑनलाइन has become part and parcel of education and you can't stop it. So what can parents do? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक मोडस ऑपरेंडी बता दूं जिसके बारे में लोगों को बहुत कम पता है। चाइल्ड ग्रूमिंग जिस जैसे होती है, रोब्लॉक्स हो, हीरो वॉर्स हो, आजकल बच्चों से पूछो तो हर बच्चा डिस्कॉर्ड पर है, जो कि एक चैट मैसेजिंग ऐप है। ये जो ऐप्स हैं बड़ी खतरनाक हैं, क्योंकि इसमें आप अननोन लोगों से बात करते हो। वो बड़ी एज का भी हो सकता है, वो आपसे आपकी उत्सुकता को एक्सप्लॉइट करके दोस्ती करता है, आपको लगता है वो आप ही की एज का है, और उसके बाद बच्चा एक्सप्लॉइट होना शुरू होता है, या तो उसकी वीडियोस बन जाते हैं या फिजिकली भी एक्सप्लॉइट होता है, वो वहां चला जाता है। खासतौर से 15-16 साल के जो बच्चे हैं, बच्चियां, उनके संग ऐसा बहुत हुआ है। अब ये सारे गेम इसलिए खतरनाक है क्योंकि इसमें काफी सारे ग्लोबल चैट फैसिलिटी देते हैं, मल्टीप्लेयर गेम्स बोलते हैं जिसमें कोई भी बंदा आपसे बातचीत कर सकता है। वहां एक लिंक आता है, बच्चा क्लिक करता है, और उसके बाद बच्चे के फोन से बहुत सारी इंफॉर्मेशन सामने के पास चली जाती है। तो सामने वाला बोलता है, अच्छा तुम्हारा फोन इतना चार्ज है, यहाँ बैठे हो, पटना में बैठे हो, ये कर रहे हो। तो बच्चा उत्सुक हो जाता है कि इसको कैसे पता। ये बहुत कॉमन हो गया है। अभी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बच्चा जरा सा भी आपका टेक गीक लगने लगे तो समझ लो वो गेम्स के अंदर ज्यादा इन्वॉल्व है और वो गलत डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली यही उत्सुकता उसकी एक्सप्लॉयटेशन का कारण बनेगी। तो ये ध्यान रखिए, कोई भी बच्चा आपका बहुत ज्यादा गेम खेल रहा है या इस तरह के सिम्टम्स दिख रहे हैं तो उस पर नजर रखिए। बच्चों को रेगुलेट कीजिए, वो अननोन लोगों से चैट ना करें, उनकी बातों पर भरोसा ना करें, चाहे वो उनकी उत्सुकता ही क्यों ना जागृत करती हो। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जो पेरेंट्स अक्सर इग्नोर कर देते हैं। दूसरा, लिमिटेड जो इंटरनेट एक्सेस बच्चों को अभी देना होगा, कि टीनेज बच्चे जिस हिसाब से ओवर यूज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का, वो भी उनके लिए चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो एक्सप्लॉइट होना शुरू हो जाएं। जैसे सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे आप देखिए तो बच्चियां ऐसे ऐसे वीडियोस बना के डाल रही हैं, प्रोवोकेटिव वीडियोस, जो 13 या 14 साल की बच्चियां। ध्यान रखिए कि ऐसा क्यों है, क्यों वो ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि इस एज ग्रुप के लिए शायद वो चीज करना जरूरी भी नहीं है और ठीक भी नहीं। तो ये मेरे ख्याल से इग्नोरेंट जो पेरेंट्स हो जाते हैं, वो अल्टीमेटली एक तरफ बच्चे को पुश कर रहे हैं, उनकी इग्नोरेंस से बच्चा खतरे में आ जाता है। All right, Dr. Parekh, I'd like you to come in here and also tell us about parents and it's something I think a lot of Indian parents don't recognize. नहीं, हमारे बच्चे ऐसे नहीं करते हैं, नहीं ऑनलाइन वो पढ़ाई कर रहे हैं। डिस्कॉर्ड तो शायद बहुत सारे पेरेंट्स को मालूम भी नहीं है क्या है, इट्स अ चैट सर्विस। कैट फिशिंग नहीं मालूम है बहुत से पेरेंट्स को, कि जो बड़े उम्र के लोग प्रिटेंड करते हैं कि वो बच्चों की एज के हैं और उनसे मतलब बातचीत करना शुरू कर लेते हैं, फ्रेंडशिप कर लेते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स पेरेंट्स ऑल्सो नीड टू, इफ यू कुड शेयर विद अस व्हाट काइंड ऑफ एग्जांपल्स यू सीन ऑफ दिस। गार्गी, देखो मुझे क्या लगता है that I don't see it in the context of Indian parents or subcontinent parents alone. Statistics हमेशा से कहीं ज्यादा कहीं कम होगा, बट ये जो प्रॉब्लम है ये वर्ल्ड वाइड है। No, absolutely, yes. दूसरी बात मुझे लगता है जो बहुत जरूरी है समझनी, हम बात ये करते हैं पेरेंट्स क्या करें, बट पेरेंट्स आर ऑल्सो अ स्मॉल पेग इन दिस एंटायर जिक्सॉ। पेरेंट्स आज की तारीख में हमें समझना जरूरी है, adolescents' ability to be on internet is far more savvy than people my age. So जो रोल है यहाँ पे, parental role is more about observation, role modeling, facilitating, encouraging children to have more outlets. दोस्तों से मिलो, बाहर जाओ, स्पोर्ट्स करो, एंजॉय करो। At the same time मुझे लगता है कि मीडिया लिटरेसी एज एन इंटेग्रल कंपोनेंट ऑफ एजुकेशन आने वाले सालों में हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट है आना। और मीडिया लिटरेसी इज नॉट मियरली अबाउट बी सेफ, डोंट शेयर इंफॉर्मेशन। मीडिया लिटरेसी इज ऑल्सो अबाउट व्हाट मिस्टर दुबे वाज टॉकिंग अबाउट, सोशल कन्फर्मिटी से कैसे बचना। लोग अगर कोई चीज पोस्ट कर रहे हैं तो आपको सेम करने की जरूरत नहीं है, लाइक्स के पीछे नहीं भागना है, व्यूज के पीछे नहीं भागना है। यू डोंट नीड टू क्रॉस अ लाइन to get attention.
ऑनलाइन गेमिंग के बारे में बात करनी जरूरी है, ऑनलाइन गैम्बलिंग के बारे में बात करनी जरूरी है। और ये सारा हो सकता है अगर हम स्कूल और कॉलेज में मीडिया लिटरेसी के बारे में कंसिस्टेंटली काम करें। While obviously educating parents, मुझे लगता है कि media agencies and houses like yourself have more conversations on mental health. हम मेंटल हेल्थ के बारे में कम बात करते हैं, बात सिर्फ अब्यूज की या ऑनलाइन गेमिंग की नहीं है। दीज आर ऑल रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ। अगर आप एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाए वेयर यंग पीपल और अदर्स कैन टॉक अबाउट मुझे परेशानी है, मुझे दुख हो रहा है, मेरा मन अच्छा नहीं है, मुझे किसी से बात करनी है, अनम्यूट योरसेल्फ। बट इफ आई अनम्यूट माई सेल्फ, I need somebody to unmute compassion, psychological first aid, and give me that support. So you need to see this in a complete picture. Role models and media houses and social media platforms need to be responsible, self-censorship, responsibility, peer reviews. Schools with media literacy and mental health curriculum. NGOs like our colleagues at Bachpan Bachao and Kailash Satyarthi Foundation doing what they do, giving legal support, involving mental health experts both in prevention, training, involving parents, training teachers, basic counseling skills, and whenever there is an incident of struggle, early identification, early intervention to prevent long-term harm. This is the roadmap that all of us need to work on. We are all stakeholders in this. हम सब इक्वली जिम्मेदार हैं। हम बहुत बार मुझे लगता है कि पेरेंट्स पे ज्यादा फोकस करते हैं कि वो ये करें या वो करें। मुझे लगता है कि जब तक हम सारे मिलके नहीं करेंगे, absolutely, it has to be, you know, a societal effort and this recognition of that children are facing these dangers and sexual abuse. Dhananjay Tingle, if you could, you know, tell us about if there is an instance of child sexual abuse, बाल यौन शोषण किसी परिवार में हुआ है, do parents often know कि कहाँ जाए, हम किसको अप्रोच करें, कैसे इसके साथ डील करें? लीगल एस्पेक्ट भी होता है इस पूरे मामले में। गार्गी जी, मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करूंगा यहाँ पे, और ये एक बहुत दर्दनाक बात है जो हमारे भारत यात्रा के समय कैलाश जी के साथ एक बच्ची ने स्टेज पे आके बोली, वो बोलना चाहती है कुछ, राजस्थान की बात है ये जी। और बच्ची ने ये कहा कि सर मेरे साथ यौन शोषण हुआ है, मैंने घर में बताया, किसी ने नहीं माना, पुलिस में गई, वहां पे पुलिस वाले ने कहा कि तुमने कुछ ऐसा नहीं किया, बड़ा आदमी है, वो प्यार कर रहा होगा। उसने उनको फिर उन्होंने कहा कि नहीं तूने ही कुछ किया होगा, किसी ने विश्वास नहीं किया। एंड देन शी आस्क्ड, अब आप बोले हम, अब आप बताओ हम कहां जाके बोले और क्या। So that is the thing. There are systems. There are people sitting there. But yes, we need to know where to go. A child needs to know बच्चे को कहां जाना है। अगर माँ बाप नहीं सुन रहे हैं तो कहां जाना है, स्कूल नहीं सुन रहा है तो कहां जाना है। This happens. हम लोगों ने 2015 से इसके ऊपर एक चाइल्ड लाइफ एजुकेशन करके करिकुलम बनाया था, जिसका मकसद ये है कि बच्चे को ये पता हो कि अगर उसके साथ कोई गलत हुआ है, और ये बात मैं बहुत साफ तौर पर बोलता हूं कि बच्चों को बहुत जल्दी पता चल जाता है कि दूसरे जो कर रहे हैं उनका इंटेंशन क्या है। ये हमारा सोचना है कि बच्चे को नहीं पता चला, ये गलत है, लेकिन बहुत जल्दी बच्चों को पता चल जाता है। दे नो। सो बच्चे जो है उनको हम लोग यही है कि बच्चे पहले पेरेंट्स को अगर पता चलता है वो सीधे पुलिस पे इन्फॉर्म करें, पुलिस के पास FIR लॉन्च हो, और जो लॉ है पॉक्सो का, दैट इज वेरी क्लियर कि अगर किसी को भी पता चलता है, अगर मुझे पता चलता है कि मेरे नेबर में बच्चे के साथ यौन शोषण हुआ है और अगर मैं रिपोर्ट नहीं करता हूं तो आई एम इक्वली लायबल, मेरे ऊपर भी एक्शन हो सकता है। सो लॉ इज वेरी क्लियर इन दिस। तो इसमें सीधा पुलिस को, चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज हैं जो बच्चों के देखरेख और उनकी सुरक्षा के लिए बनी है, उनको इन्फॉर्म करें। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को इमीडिएटली इन्फॉर्म करा जाना चाहिए बाय एनीवन, अगर बच्चा जिससे शेयर करता है। अगर स्कूल में this is what happens when the school, even school counselors, if they come to know any effect of this kind of thing has happened, they should be reporting to the police. And मैं यहाँ पे मीनू जी से थोड़ा सा डिफर करना चाहूंगा, वो ये कहूंगी पेरेंट्स इज फाइन, लेकिन स्कूल्स भी अपनी इमेज को बचाने के लिए they don't come forward to report the matter.
And this, as we have seen in many cases where it has happened, that the school has tried to hush up the matter, and in the end, things have gone bad. And again, we come down to the shame associated with it, whereas it shouldn't be, that shouldn't be the focus. The focus should be the child's welfare and ensuring the child can come out of this trauma. Dr. Meenu, I'll give you a chance to respond to that and also talk a bit about it, because that's it. What Dhananjay ji said, it's a fact. We've seen this happening, and schools also need to change their attitudes to this, change the way they deal with cases of child sexual abuse. We'll slip into a break and talk about that when we're back. Feels like they say the zero is nothing unless it connects the dots and the real story emerges. Unless it captures the truth. They say the camera never lies. Unless it is the essence of India, of diversity and tolerance. Unless it reveals the wealth of nations and silences the barrel of a gun. Unless it reflects the sadness in the eye of the tiger as forests disappear. In fact, the dot is the center of your universe and of ours. The dot is the essence of NDTV, the essence of just one word: trust. One thing that's clear, our world is changing forever. NDTV, Rail News by Rail Journalists. सच दिखाते हैं ताकि दुनिया के बाजार में आजादी सस्ती न बिक जाए। कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे। सच दिखाते हैं हम ताकि पैसे की चमक से कभी हुनर ना पड़े फीका, खुदगर्जी खोखला न बना दे सोचने का तरीका। सच दिखाते हैं हम ताकि अच्छे विचार और आदर्श बस किताबी बातें ना रह जाएं। चुनौतियां काफी ज्यादा हैं, बड़ी चुनौतियां हैं। एक बेहतर कल चाहते हैं हम, इसलिए सच दिखाते हैं हम। एनडीटीवी इंडिया, जुबान पे सच, दिल में इंडिया। The show where the country speaks its mind. This is a first step in the direction of giving women at least a fighting chance. This is all wishful thinking. Today also you see 23% of our girls are married off before 18. Your mirror to what India thinks. Everybody had that second thought, how could you be in fashion because you don't look like a person in fashion? And that for me needed to change. We the People with me, Sarah Jacob, only on NDTV. If you care about it, we'll talk about it. Now cryptocurrency ऊपर जाएंगे और नीचे जाएंगे. Bitcoin, blockchain, Dogecoin. हर चीज एक revolutionary solution. The noisy buzz of cryptocurrency tiring you much? Take an easy sip of coffee and crypto. Your one-stop destination for simplified explainers, industry experts, newsmakers, and Janta's opinions. This is the coffee shot you need to get high on crypto. Watch CoinSwitch presents Coffee and Crypto every Friday at 6:30 p.m. only on NDTV 24/7. Cutting through agendas, obfuscation, whataboutery, excuses.
Welcome back to our special show. We're focusing on child sexual abuse, the mental impact that it can have on a child, and what we as a society can do in dealing with this horrific crime that we see happening more and more to children. Now a report, imagine the psychological impact on a 13-year-old child who's been sexually abused and threatened by her own father and cousin. Such is the plight of a young girl, Aashi. The Kailash Satyarthi Children's Foundation sister organization, Bachpan Bachao Andolan, is acting as the support person for this child and also providing legal help to her mother so that Aashi can get justice. We have, of course, changed the name of the child to protect her identity. Take a look. Like any other 13-year-old, Aashi's life revolved around school, family and friends. Till one day, her world turned into a virtual nightmare. Her mother noticed some changes in her physical appearance and took her to the hospital for a checkup. मैंने कहा बेटा पैर कैसे सूज रहा है, मैंने उससे पूछा किसी का, तो कह रही जब से मैं वहाँ फूफी के यहाँ गई जब से मेरा कुछ नहीं हुआ। तो जब मैंने देखा था फिर वो क्या नाम है डॉक्टर के लगे, फिर वहीं पुलिस थाना हो गया वहीं पे। The checkup revealed that she was pregnant. Trembling with fear, Aashi broke down and confided in her mother and narrated how she had been raped by her own father and then threatened to keep quiet. शुरू मैंने बताया उन्होंने धमका रखा तेरी अम्मी को छोड़ दूंगा, वो नशा करते हैं ना, पहले नशा करके बच्चों को मारते हैं, मुझे मारते हैं। तो आपके हस्बैंड जी, तो इस मारे उन्होंने कुछ बच्चों ने कुछ बताया नहीं। But this wasn't all. Aashi also revealed that she was raped by her 15-year-old cousin as well when she had gone to visit her aunt. Determined to get justice for her daughter, her mother wasted no time in filing a police complaint. Aashi's father was remanded to judicial custody. Her cousin too was apprehended but later released on bail. On Child Welfare Committee's orders and in consultation with her family, Aashi's pregnancy was terminated in April this year. Standing by the traumatized child, Kailash Satyarthi Children's Foundation's sister organization, Bachpan Bachao Andolan, is providing her necessary legal support besides acting as a support person. First and foremost thing was to build a rapport with the family. And other thing was most important was to take her out of the trauma which she was suffering. And also to provide legal support and filing an application for the victim compensation as well as a special package of 10,000 which has been approved, which have been recommended and approved by the CWC for the families to come out of the financial problem, as her mother is working in a factory just getting 4,000 rupees. As Aashi struggles hard to move ahead in life, her ordeal acts as a grim reminder of the fact that in nearly 90% of child sexual abuse cases, perpetrators are known to the children. Our children are not even safe in their own homes. Kailash Satyarthi Children's Foundation's Justice for Every Child campaign is providing much-needed legal and mental health support to child victims of sexual abuse and rape across the country. Your support can go a long way in ensuring continued support to vulnerable children. Come forward and donate. Every child matters. Bureau Report, NDTV. All right, very, very sad story there and the plight of one child. And Dr. Meenu Dubey, if you could talk about, the kind of interventions that one needs to provide a child if you can identify the problem, be it a school. And, earlier we spoke about how sometimes schools also try to hush this up because of the shame associated with it. But it must never be the child's shame. It has to be, shame that we could not prevent it. But we have to then, look at the positives and how we can help the child and ensure the trauma is minimal. Yeah. Gargaji, I actually, agree with what Mr. Dhananjay Tingle said, that some of the schools actually, they deliberately hide these cases. And look at the schools, ये जो हमारे privileged schools हैं, इन्हीं स्कूलों में हम लोग ये programs run करते हैं या अपनी तरफ से sensitization करते हैं. But there are thousands and millions of schools, गांव के स्कूल्स हैं, छोटे छोटे कस्बों के स्कूल्स हैं जहाँ पे इन सब चीज़ों के बारे में बात भी नहीं की जाती है. और वहाँ पे अगर आप इन सब इश्यूज को लेके आते हैं तो उनका एक रिएक्शन
बहुत ही अजीब तरीके का होता है, क्योंकि उन लोगों ने ये चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज और इस तरह की टर्मिनोलॉजीज, नीदर they believe onto all these things. When we try to actually tell them and convince them that what is this is basically POCSO and all these terminology, when we tell them, then it just goes out of their heads. So it is very, very necessary step to penetrate to all these schools, whether they are small, whether they are government schools, the public schools, or the privileged schools. Everywhere you have to do it. That is then only we can see this 53% of the statistics of no, children absolutely getting abused. You're absolutely right, and which is why we need a lot more awareness. There has to be a conversation, campaigns like this one, Justice for Every Child. It's what we're trying to do, to create awareness, and also to create awareness about legal remedies and help that's at hand for children who face this. Pradeep Rawat, being a part of this this parent association, tell us a bit about when you talk to parents and try to create this awareness, and how parents, when faced with this, if a child ever discloses an abuse, then the parent can never, react with a sort of a blame on the child. कि इस तरह का रिएक्शन नहीं हो सकता है कि बच्चे की गलती है इसमें. I totally agree with you. The fact remains कि जब भी हम पेरेंट्स से इस बारे में बात करते हैं, क्योंकि basically being a child supporter myself, I am very active in social media also. A lot of children write to me on Twitter also. They have certain problems either with the authorities or somebody is troubling them, even the peer pressure of doing certain things. And when I ask children, you can discuss this problem with me, being a person who you don't even know, you're just meeting me on Twitter or social media. Why can't you discuss the same problem with your parents or with your family? So they say that we are scared. If we talk to the parents, they react differently. They start blaming us. They say, just because you are spending too much time on Twitter or you're spending too much time on social media, Instagram, you are making a mistake. The fact remains, parents need to be educated first, then the children will become rather feel more safer. Same thing, I can suggest one more thing. All the schools, whether they are government schools or private schools or public schools, whatever schools they are, they should have a suggestion box. And that should be mandatory for every school. Government should in fact introduce this idea of having a suggestion box for children. And that suggestion box should clearly say, if a child feels aggrieved because of anything, not just physical touch or sexual behavior, anything, he feels aggrieved, he should write. If he want to mention his name, or that letter should be given to the suggestion box, so he could put it there, and that suggestion box should be opened in front of a parent-teacher meeting, not just the teacher itself, because as the previous panelist said, sometimes schools try to hush up the matter. So once that thing happens, it will help not only the children, it will help the society as well, that we will know what exactly is happening. And as far as parents are concerned, yes, I agree. When I try to talk to the parents, sometimes they just try to laugh it off the matter. They said, no, this is nothing like that. Our child is, he or she doesn't want to study. That's why he's creating reasons or giving excuses that because somebody is troubling me, that's why I'm not studying. So basic idea is we need to create a system of checks and balances. In that system of checks and balances, if parent is making a mistake, school should be able to intervene. If school is making a mistake, parent should be able to intervene. And if both are making a mistake, then society as a whole, me being a neighbor or me being a child activist, or somebody from the law side, somebody from the government side, there should be, in social media campaigns, I agree with you that this Justice for Every Child is a good social media campaign, but I'm sorry to say that is not been highlighted too much. I mean, not many people support it. And even if you involve some celebrities, I totally agree that celebrities do bring people, but celebrities don't spend that much of time in these campaigns. Involve people like us who are actually, in touch with the No, we were trying to involve everyone, in fact, in the course of this entire campaign, speak to everyone. That's why we have you on this show right here. And, and you're absolutely right. These checks and balances are needed in society. We're going to slip into a short break now and return. And I'd like final comments from everyone on this panel today on what we